Hello friends, welcome to the new project of Basics of Electronics. इस प्रोजेक्ट में हम बिना Arduino के सर्किट्स बना रहे हैं. In this project we will not be using any Arduino. We will be using basic electronic components and making the project. So today what we are going to see is we are going to see how an NPN transistor works. So for that obviously we will require an NPN transistor. So this is an NPN transistor. So आज हम सीखने वाले हैं NPN ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है. तो हम इस्तेमाल करेंगे NPN ट्रांजिस्टर को एक स्विच की तरह जो लाइट को ऑन एंड ऑफ करेगा. So today we will be using NPN as a switch which will switch on or switch off the LED. So if you see an NPN transistor, इसमें तीन पैर होते हैं, collector, base and emitter. It has three legs which is collector, base and emitter. So always remember when you are holding a transistor, you will hold it, a physical transistor, you will hold it in a way where the flat side is facing towards you. So आप flat side को जब अपने तरफ रखोगे तो आपको जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में टर्मिनल मिलेगा वो आपका कलेक्टर होगा, बीच का बेस होगा और सबसे राइट हैंड में जो टर्मिनल मिलेगा वो आपका एमिटर होगा. So first is our NPN transistor. Now how does an NPN transistor works is it acts like a gate. It is going to connect collector with emitter. वो कलेक्टर और एमिटर को कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ. अगर बेस पे वोल्टेज आए, मतलब it is going to connect the collector and emitter to each other if there is a voltage on the base. If there is no voltage on the base, it will not connect to each other. So इमेजिन करो कि बेस जो है आपका ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई सिक्योरिटी खड़ी है और ये कलेक्टर है या एमिटर है. आपको कलेक्टर और एमिटर को कनेक्ट करना है, मतलब आपको यहाँ से यहाँ जाना है या फिर एमिटर से कलेक्टर इस तरह से कनेक्ट करना है. तो ये बी जो है ये आपका सिक्योरिटी गार्ड है जो बीच का बेस है. अब आप इसको ब्राइब देते हो वोल्टेज की, आप इसको रिश्वत देते हो वोल्टेज का, तो इधर वोल्टेज आएगा तो ये गेट खोल देगा, तो ये दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे, ठीक है. बट ये जो बेस है इसको एक स्पेसिफिक अमाउंट लगती है, उससे कम अमाउंट में वो मानेगा नहीं. It takes a bribe and it requires a specific amount. If it doesn't get that amount, it will not open the gate. So we need to deal with it. That amount is 0.7 volt. So 0.7 volt से अगर ज़्यादा वोल्टेज आया यहाँ तो ये दोनों को कनेक्ट कर देगा. So the minimum amount which base takes as a bribe is 0.7 volts. So if the voltage is more than 0.7, then it will connect collector to emitter. And to see the variable voltage here, we will be using the next device that is called as a potentiometer. Okay. So potentiometer कुछ ऐसे दिखता है. So ये हो गया हमारा ट्रांजिस्टर. अब देखते हैं पोटेंशियोमीटर क्या होता है. So this was our NPN transistor. So this is NPN stands for negative, positive, negative. So wherever we are going to use this transistor, this end is going to be connected to negative terminal and this end also to the negative terminal. So this is an NPN. So negative, positive, negative. Okay. So when we connect it in the circuit, we need to keep in mind that these ends are to be connected towards the negative of the device. Now पोटेंशियोमीटर क्या होता है. अभी पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो ये नॉब घूमता है. This knob rotates in the potentiometer and it regulates the flow of voltage or it regulates the flow of current as well. So ये घूमने से वोल्टेज और करंट में कम या ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं. इसको भी तीन टर्मिनल्स है, एक है टर्मिनल 1, एक है वाइपर और एक है टर्मिनल 2. तो इसका कनेक्शन तो बहुत आसान है. यहाँ पे आप अगर एक वोल्टेज कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप ग्राउंड कनेक्ट करोगे.
मतलब यहाँ पे मैक्स वोल्टेज है और यहाँ पे 0 वोल्टेज है, और ये जो है ये आपका आउटपुट देगा। तो जैसे मैं ये रोटेट करूँगा, मेरा वोल्टेज यहाँ पे समझो, लेट्स से मैंने कनेक्ट किया है 5 वोल्ट, तो यहाँ मेरी वैल्यू 5 वोल्ट होगी, और इसको मैं रोटेट करके अगर यहाँ लाऊंगा तो इसकी वैल्यू 0 वोल्ट है। अब ये 5 से 0 का जो आउटपुट है ये वो वाइपर पे देगा। तो अगर मैंने यहाँ पे रोटेट करके यहाँ लाया तो ये मुझे आउटपुट में 0 वोल्ट देगा। अगर मैंने बीच में रखा तो मुझे आउटपुट में 2.5 वोल्ट देगा। If I rotate this knob, so if this is my 5 volt and this is my 0 volt, so whichever position my knob is right now, it is going to provide 5 volts output on the wiper. Now if I rotate the knob here and bring it to the rightmost end, so it is going to give me an output on the wiper of 0 volts. Now similarly, if I keep the knob at the center, it will give me an output of 2.5 volts. So that is how a potentiometer works. So we have our two devices, that is an NPN transistor, then a potentiometer, and you'll require two more devices, a resistor. So I am taking 1 kilo ohm resistor and a 220 ohm resistor. Okay, so this is my 1 kilo ohm resistor, this is my 220 ohm resistor, and an LED. So these are my devices from which I am going to make an switch which is made up of an NPN transistor, which will light up the LED as we rotate the knob. Okay, so let us make the connections. So the components हमारे पास एक NPN ट्रांजिस्टर है, एक पोटेंशियोमीटर है, एक रेजिस्टर है जो 220 ohms का है, एक रेजिस्टर है जो 1 किलो ओम का है, और एक LED है. सो LED का पॉजिटिव नेगेटिव तो आपको पता है, एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव. रेजिस्टर को कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, वो पैसिव डिवाइस है, जबकि LED ये एक्टिव डिवाइस है. तो ये कनेक्शंस बनाते हैं. अभी इस कनेक्शंस में हम लोग देखेंगे कि हम मैक्सिमम 5 वोल्ट का इनपुट देने वाले हैं. मैक्सिमम इनपुट विल बी 5 वोल्ट. सो फॉर दैट आई एम यूजिंग पावर सप्लाई. आई एम यूजिंग अ पावर सप्लाई डिवाइस. तो मुझे 5 वोल्ट का ही इनपुट देना है, तो मैं पावर सप्लाई इस्तेमाल कर रहा हूँ. पावर सप्लाई में दो नॉब्स होते हैं. यहाँ पे वोल्टेज 0 से 30 तक वेरी कर सकते हो आप. सिमिलरली करंट का भी. ओके, तो आइए कनेक्शंस बनाते हैं. तो सबसे पहले सो लेट्स मेक आवर कनेक्शंस. सो एज यू नो ब्रेडबोर्ड्स, दिस रेल्स आर कनेक्टेड हॉरिजॉन्टली. Similarly, these rails are connected horizontally, while the middle rails, that is from A to E, are connected to each other vertically. Similarly, F to J. So if you take this column from 1, so A to E are connected and F to J are connected. So let us make our connections. So this is positive, this is negative, and this. Okay, so I've connected the power supply. This is all 5 volts now, and this is all ground. Now let us make our connections with the potentiometer. So I'm taking a potentiometer, I'm taking a transistor, and I'm taking a LED. So मेरा ये तीन components है, LED, transistor and potentiometer. So आइए इसके connections बनाते हैं. तो सबसे पहले तो मैं कर रहा हूँ potentiometer का terminal 1 मैं positive को connect कर रहा हूँ. I'm showing it by red. So this end of the potentiometer is connected to positive. अभी देखिए ये सारे होल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट ये कनेक्टेड नहीं है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा हूँ. देखिए, सो इस तरह से भी कनेक्शन बनाए जा सकते हैं कि दिस एंड इज कनेक्टेड टू दिस एंड ऑफ द वायर, देन दिस एंड हियर. नाउ दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. अनदर वे इज आई विल मेक ऑल द कनेक्शंस डायरेक्टली फ्रॉम हियर टू हियर. तो आप किसी भी तरह कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है. तो from this end to this end. So this is positive. Now this end will be connected to the negative. मैंने बोला था 0 volt. So negative. So negative is shown by black. Negative हमेशा काले से दिखाते हैं, और positive जो है वो किसी भी कलर से आप दिखा सकते हो. मैं जनरली रेड से दिखाता हूँ.
तो देखिए मेरा ये पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन बन गया है। अभी मैं कनेक्ट करने वाला हूँ वाइपर, जो मेरा आउटपुट है, जो मैं घुमाऊंगा तो मेरा जो भी आउटपुट आएगा इस वाइपर पे आने वाला है। इस वाइपर को मैं ट्रांजिस्टर से या एनपीएन से कनेक्ट करने वाला हूँ। सो उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ सबसे पहले तो एक 1 किलो ओम का रेजिस्टर। सो मैं रेजिस्टर ले रहा हूँ, मैंने ये फंक्शन से उसको रोटेट किया है। तो देखिए मैंने रेजिस्टर इसके साथ कनेक्ट किया है, तो मेरा रजिस्टर इस एंड पे कनेक्टेड है और अभी यहाँ से मुझे इसको यहाँ कनेक्ट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ये वाइपर है, फ्रॉम वाइपर आई हैव कनेक्टेड टू 1 किलो ओम and from this end now all these holes are connected, so I'm taking a wire and I'm connecting it to the base. See here, this is a wire, I'm connecting it to the base of the transistor. Now this is I'm making it orange. So my wiper of the potentiometer is connected to the base of the transistor using a 1 kilo ohm resistor. I hope it's clear. Now let's move ahead. Now the collector of the transistor is going to be connected to the device and the negative of the device, because it is an NPN, so negative, positive, negative. So I'm taking it here. See, so collector connected to the negative of the LED. As you can see, I'm just changing the color. I will use some another color. Okay, so see here. So I hope you must have understood the circuits up till now. Whatever we have done, I have connected the collector to the negative of the LED, that is the cathode. Now the other end is the positive one, so I am putting a resistor here. See, so this positive end of the LED is connected to this resistor and the other end will be connected to, can you tell me which end positive will be connected to? If you know, please put it in the comments. So this end will be connected to the positive. I'm putting it with red. Now my entire circuit is ready. Let us analyze the circuit again. So what we have done is, I have used a transistor, I have used a potentiometer, and I have used two resistors and an LED. I need to see how NPN transistor works as an switch. So this is a potentiometer. NPN transistor gives or makes connections between collector and emitter. It works as a gate when it receives some voltage at the base. And what is that some voltage? It is a voltage of 0.7 volts. So any voltage more than 0.7, it will connect with collector and emitter. So it will connect emitter with collector so that the circuit is complete. So let us try working on this. So I will start the simulation. You can see the connections, it is in front of you. I will start the simulation. Now see. Now if you see the connections, right now my voltage is 5. What has happened? Let me check. Oh sorry, my one connection is left. मैंने देखिए मेरी गलती हो गई यहाँ पे. one of my terminals is left open. Collector is connected. You can see collector is connected here to an LED, but emitter is still left to be connected. You can see here emitter मैंने कहीं पे भी कनेक्ट नहीं किया है, इसलिए मेरा सर्किट काम नहीं कर रहा है. ये होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऐसी गलतियाँ होती है, छूट जाती है चीज़ें. सो देखिए मेरा एमिटर कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है, तो मैं अभी एमिटर को कनेक्ट कर रहा हूँ. आई एम गोइंग टू कनेक्ट एमिटर. नाउ यू कैन लीव इट इन द कमेंट्स कि मैं एमिटर कहाँ पे कनेक्ट करूँगा. वेयर एम आई गोइंग टू कनेक्ट दिस एमिटर? आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस एमिटर टू द negative, correct, because it is an NPN, so negative positive negative. so ये negative को ही connect होगा, मतलब ये ground को connect होगा, ये positive को connect नहीं होगा. तो देखिए अभी मैंने कनेक्शंस बना दिए, अभी मेरे कनेक्शंस कंप्लीट है. अभी मैं जैसे ही नॉब को घुमाऊंगा कुछ तो भी होगा, देखते. देखिए अभी मेरा मैक्सिमम वोल्ट पे है 5 वोल्ट्स पे,
तो मेरा एलईडी जल रहा है। अभी मैं नॉब घुमाता हूँ, देखिए अभी है 2.5 वोल्ट पे, 2.5 वोल्ट्स। आई एम पुटिंग इट डाउन, सी। Now when it comes below 0.7, see what is happening with the LED. LED has switched off. If I start increasing this, see LED has started glowing. You see here. So as the base receives any voltage higher than 0.7 volts, it is completing the circuit. Which circuit is it completing? So it is making connections between the collector and emitter. How it is making? See here. So as soon as it receives, I will explain the entire circuit. Let's say I have a voltage which is greater than 0.7. So this is my greater than 0.7 volts. So see, it is connecting emitter with the collector. Now see, the current is flowing from 5 volts here through the resistor into the LED, through the LED. From this end it is going to the collector, and from the collector, as the base is receiving a voltage higher than 0.7, collector gets connected with the emitter, and from the emitter it goes to the ground. And as the circuit is complete, your LED is glowing. If anything is less than 0.7, that means the base is not receiving enough voltage. See, if I increase it till here, there is no light in the LED, so there is no enough voltage at the base. So what is happening is this circuit is not getting complete, as this 5 volts from this collector is not getting connected to emitter, as the voltage at the base is less than 0.7. So there is no connection here, so LED is not glowing. So here in this project we actually saw two devices, which is an NPN transistor, and we also saw a working of potentiometer. One end is connected to 5 volts, other end is connected to ground. Central end is your wiper, which is your output voltage. When you rotate this knob, it switches from 5 volts, whatever max volt you have connected, from 5 volts to 0 volts. So I hope you must have understood the circuit. मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने दो डिवाइसेस सीखे, एक पोटेंशियोमीटर, एक ट्रांजिस्टर। पोटेंशियोमीटर एक एंड 5 वोल्ट को लगा है, ट्रांजिस्टर का एक एंड आपका ग्राउंड पे लगा है। तो ये 5 वोल्ट है, ये मैं नॉब घुमाऊंगा तो ये 0 वोल्ट है, मतलब ग्राउंड है। सेंटर में रखूंगा तो ये बीच का है। आउटपुट आपको वाइपर पे मिलता है, तो इसलिए पोटेंशियोमीटर को 3 टर्मिनल्स होते हैं। आई होप आपको आज का प्रोजेक्ट में कुछ सीखने मिला होगा, कुछ नया करने मिला होगा। ओके, थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।